यस। तो लास्ट टाइम हमने मुझे लगता है कुछ 28 या 27 तक किया था, या 25 तक किया था, राइट? यस। उसके आगे के आपने ट्राई किए? और इस ये जो शीट हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके अलावा और एक शीट मैंने आपको डाउनलोड सेक्शन में दिया है, अपलोड किया है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। होप सो आपने मे बी किया भी रहेगा। है कि नहीं? ठीक है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, ये 28 वाला जो है ना, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, सो डोंट ट्राई इट। वो क्वेश्चन में ही कुछ करेक्शन है, तो इसलिए वो ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई दिस 27th वन। ओके, वो तो थोड़ा सा ओके, कैन ट्राई दिस 29th वन राइट नाउ। Okay, so let us read the question. Yes. See here, it tells us simply that a cell has an EMF of 2 volt and internal resistance of that cell is 3.9 ohm. The voltage across the cell will be, yes, we want to find out the voltage across this cell. How can we get that? See, there is a cell of EMF 2 volt. That means we have this. Suppose this is the diagram. This is going to be the cell. ये सेल है और उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 3.9 ओम। ओके, एक्चुअली देखो, इसके अंदर करंट दिया है क्या? क्योंकि देखो होता क्या है ना कि द पोटेंशियल डिफरेंस इन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज एक्चुअली इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, करेक्ट है? अभी इसके अंदर जो है करंट तो दिया ही नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू अज्यूम दैट नो करंट इज गोइंग टू बी फ्लोइंग इन दिस सर्किट, राइट? तो अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होता है? क्या बताया था? इफ द नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, नहीं, शायद क्वेश्चन में फिर से कुछ करेक्शन है।
Okay, there is some correction in the question. See, the question is that the cell has an EMF of 2 volt and internal resistance of 0.1 ohm, and it is connected to a resistance of, okay, it is connected to a resistance of 3.9 ohm, then the voltage across the cell will be, okay. तो ये हमको दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सेल के बाहर में जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है, इट इज गिवन टू बी 3.9 ओम। तो अभी देखो इसमें इसका मतलब जो 3.9 ओम जो दिया है ना, इट इज नॉट एक्चुअली द इंटरनल रेजिस्टेंस, बट इट इज गोइंग टू बी एक्चुअली द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वी कैन सी। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 3.9 ओम का है, यस। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.1 ओम है, और उसका ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट है। ठीक है, so how can we get this potential difference in the two terminals of this cell? By using this formula, but this formula actually requires current, right? So how will we get the current? Current के लिए हमको ये Ohm's law on a complete circuit use करना पड़ेगा. What is the Ohm's law on complete circuit? So it is simply E upon R plus small r, correct है? तो ये अगर हम यूज करेंगे तो हमको मिलेगा द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 2 ohm, sorry 2 volt upon external resistance which is of 3.9 ohm plus internal resistance which is of 0.1 ohm, right? So just we have to add these two up here and we get this 3.9 plus 0.1, and this comes out to be actually, yes, 2 upon 4, and this 2 upon 4 comes out to be 1 by 2, or we can call it as 0.5 ampere, correct hai? So this is actually going to be the current. Once we get this current, we can just put it here in this formula, or just we can also use the Ohm's law, which tells us simply that V is equal to I into R. The current into external resistance will also be give the potential difference across the cell, which is going to be actually 0.5, and that is multiplied by R. R is nothing but 3.9 ohm, right? So if we just put it here, then 3.9 multiplied by 0.5, which comes out to be 4 5s are 20. So it will be 1 point. Hello? नंतर फोन करून माझं लेक्चर व्हायची. Yes. So basically, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, this the product of these two will actually become equal to 1.95, okay, volt. And even we can use this also. E is going to be 2 minus I is going to be 0.5 once again into R, which is going to be 0.1, so that we get this V is equal to 2 minus 0.05, which again comes out to be the same thing, that is 1.95 volt. Okay, so this is actually going to be the correct option. Yes, let us go to the next question, 27th here. Just read it once. See, in the circuit given below, the points A, B, C are at potentials 70 volt, 0 volt and 10 volt respectively. तो मतलब इस A का पोटेंशियल कितना है, 70 वोल्ट है। इस B का पोटेंशियल है, ये देखो ये B है, तो इसका पोटेंशियल दिया हुआ है 0 वोल्ट। ओके, ये 0 वोल्ट, ये पोटेंशियल जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे उसके सामने। ठीक है, A का पोटेंशियल दिया हुआ है 70 वोल्ट, राइट? और एट द सेम टाइम दिस C का जो पोटेंशियल है वो कितना दिया है, 10 volt. Yes, so we have given these volt potentials, not potential difference, huh? They are just the potentials actually. Then what is true out of all these four options, A, B, C, D? The point D will be at potential 60 volt. Okay, how will you find out the potential at D here? इस point का potential कैसे ढूंढ के निकालेंगे? देखो, एक सीधी सी बात ये है कि the current always have a tendency to flow from high potential to low potential, correct है?
So where the current will flow in this circuit, can you tell me? 70 is the highest potential point, right? And 10 and 0 are both of these are the low potential points, right? So current will start flowing from this point A and will continue to flow from A to D along this path, and will just get split up here. The some current will just flow towards B, and remaining one will just flow towards this C. Getting this? So the current entering from A to D here will just be the sum of the currents which are getting split up in two parts, one of which flows through this up to the B, and the remaining one flows to this C. Okay, so that means if we just write the current flowing this through this AD to be simply I1, okay, इसको अगर हमने I1 बोल दिया, okay, इस करंट को अगर हमने I2 बोल दिया और इस वाले को अगर I3 बोलते हैं, तो हम एक क्लियर कट इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप लिख सकते हैं, जो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये तो सभी एग्री करेंगे, ओके। बिल्कुल, ये तो सभी को मानना पड़ेगा कि AI जो है, I1 जो है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी सॉरी I2 प्लस I3, ओके। ये I1 मतलब इस मेन ब्रांच के अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है, ए से जो फ्लो करंट स्टार्ट होगा, वही दो पार्ट्स में बटेगा, कुछ इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा। तो इसलिए जितना इस तरफ जाएगा और जितना इस तरफ जाएगा, उन दोनों का जो सम है वो कितना रहेगा, जो मेन ब्रांच में से आ रहा है, ठीक है। इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, ये सिंपल सा फैक्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 ये हमको मिल गया। बट व्हाट इज I1? Do you know that this current is always equal to the potential difference upon resistance? करेक्ट है कि नहीं? देखो ठीक से, करंट का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है, ओम्स लॉ से ही हमको मिलता है। द करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, करेक्ट? सो इफ नाउ वी यूज दिस फॉर्मूला हियर इन द पार्ट एडी, व्हाट वी गेट हियर इज, तो एडी के अंदर करंट कितना है? देखो I1 है, but this current should be actually equal to the potential difference between these 2 points, right? A and D. So what is the potential difference between A and D? If we consider the potential of D as suppose VD, चलेगा ना? VD is going to be, या चलो simply V मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? V is, या चलो X मान लेते हैं, चलो ठीक है, we can assume it as X. X is the potential at point D. We can just mention it here. Let X is going to be the potential at D. Okay. तो अगर D का पोटेंशियल X मान लिया, तो what is going to be the difference between the potential at A and D? This 70 minus X. Do you agree with this? So that is going to be the potential difference between A and D. So we can just consider this I1 to be simply equal to 70 minus X, and that is to be divided by the resistance of this part of AD. How much it is? It is going to be 10 ohm, which is already here, 10 ohm. Okay, so just put it here. Yes, so this becomes the current in AD, which is denoted by I1. तो इस I1 के बदले हमने इसको डिनोट कर दिया, रिप्लेस कर दिया 70 minus x upon 10. ये समझा कैसे आया? इस फॉर्मूला से हमको मिल रहा है वो, that is current is equal to potential difference upon the resistance, right? So here if we focus on AD only, then the current is going to be I1, which has to be equal to the potential difference between the two terminals A and D, which is going to be 70 minus x, and that is to be divided by the resistance in this part of AD, which is 10. Okay, now the same thing can be done here about I2 also. I2 के लिए क्या होगा? Change सिर्फ इतना होगा कि I2 is the current in this DB, करेक्ट है? DB, तो DB मतलब ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर फ्लो होने वाला करंट I2 है। How can we get this current I2? Just by dividing the ratio of the difference in potentials between D and B. अभी D और B के बीच में potential difference कितना है? देखो, D का potential है X और B का potential कितना है? 0. So what is the potential difference between them going to be? X minus 0. That's simple. And that is to be divided by the resistance in this dB, which is going to be 20 ohm here. So we have to divide this by 20, and plus the same thing again can be actually done for this I3 also. So I3 के लिए क्या करेंगे? देखो ठीक से, again this I3 is going to be the ratio.
I3 is going to be the current flowing through this D to C, right? So D से C की तरफ जो करंट फ्लो होगा तो वो हमको कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमको D और C के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो हमको कंसीडर करना होगा. So what is the potential at D? It is X. And what is the potential at C? It is 10. And obviously we know that this X is going to be greater than 10 because the current is flowing from D to C. That means potential at X must be greater than the potential at C because current always flows from high potential to low potential. That's why we can conclude that this X must be greater and 10 must be smaller. So what is the potential difference between X, D and C? It is going to be X minus 10. Do you agree with this? See, X minus 10. And that is to be divided by the resistance of this part DC, which is 30 ohm only. So if we just put this 30 ohm here in this equation, then we can just get a concrete equation which can be simplified mathematically. अभी इसके आगे का जो पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है, मैथमेटिकल है, क्योंकि इस पूरा इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हर एक के डिनोमिनेटर के अंदर हमको जो 10 का मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है, 10 का मल्टीपल, इसलिए इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 to this whole equation or both sides we can say, then what we get here is into 10 किया तो ये 10 cancel हो जाएगा, we'll just be left with 70 minus x, right? And again here in this right hand side, x by 20 multiplied by 10 gives us x by 2 only, right? Plus here it will be x minus 10, that is divided by 3 only because we have multiplied already by 10, so 0 0 cancel हो गया, तो ये इक्वेशन हमको मिल रहा है. अभी इसको सिंप्लीफाई करो आगे, तो देखो एलसीएम अगर निकाल के लेंगे तो हमको मिलेगा 70 माइनस एक्स इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 और x दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, it becomes actually 3x, right? And plus here again this 2 and x minus 10 when multiplied together actually becomes 2 times of x minus 10, right? And finally in the denominator this 2 will just get multiplied with this 3 so that we get this 6 here, and this 6 can now be transferred to that side and get multiplied here so that we can get in the next step, that is 6 into 70 minus x, okay, which is going to be equal to 3x plus, if we just open this bracket then we get this 2x minus 20, and now this can be solved further. 70 into 6 कितना बनता है, 420. 420 minus 6x is going to be actually equal to 5x, right? 3x plus 2x मतलब 5x. Okay, so this is 5x minus 20 as it is, and if we just shift this 20 in that side and shift this minus 6x into this side, then what can we get here is, sorry, okay, so इससे हमको मिलेगा, yes, 420 plus 20, और उस तरफ क्या मिलेगा, 6x plus 5x, and if we just solve this further then we can get this 440 is equal to 11x. If you just divide both sides by 11, then we can just get this 11 cancelled, and 11 ones are 11 fours are, and 0 as it is. So we are going to get this x equal to 40 volt, right? So x is equal to 40 volt. But what is x? Is the potential at point D here, right? So what we are obtained here is the potential at the point D will be 40 volt, but it is 60 volt. It's wrong. Again, here it is given that the potential at the point D will be 20 volt, which is again wrong because we already obtained that the potential at point D is going to be 40 volt. Okay, so ये दोनों options तो wrong हो गए, A और B wrong हो गया. बाकी अभी C और D के अंदर में से हमको चेक करना है, ठीक है. अभी देखो currents in the path AD, BD and DC are in the ratio 1:2:3.
or the currents in the paths AB, AD, DB, and DC are in the ratio 3:2:1. That means we have to find out the current ratio. If we find out the ratio of currents, then immediately we can get one out of these two as the correct answer. Okay, so try to find out the ratio of currents. Yes, what is the potential difference across, what is the current I1? Can you find out? See here, we can easily find out the current I1, I2, and I3. Instead of finding the ratio, we'll just try to find out the current itself. Okay, so try to find out current. Yes, first of all, try this I1 here. What is I1? करंट I1 का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो यहाँ पे हमने लिखा है ऑलरेडी उसको, राइट? तो 70 माइनस x अपॉन 10, ये I1 का वैल्यू है, जबकि x हमने जस्ट अभी अभी फाउंड आउट करके निकाला, जो कि 40 मिल रहा है. इफ यू जस्ट पुट दिस x हियर, देन वी गेट दिस 70 minus 40, that is to be divided by 10. How much it comes out to be? You can see. Yes, it comes out to be 30 divided by 10, मतलब 3 एम्पियर. करेक्ट है. Just try to find out I2. I2 के लिए अगर सेम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो what is I2? It is x minus 0 upon 20, right? So it is going to be x minus 0 upon 20, but x is already obtained to be 40. So if we just put it here, then we get this 40 upon 20, which comes out to be 2 ampere. Okay, and this third one, that is I3 here, is actually going to be, ये formula देखो I3 का, x minus 10 upon 30. So it is going to be x minus 10 upon 30, but x is already obtained to be 40. So we get this 40 minus 10 upon 30, which happens to be 1 ampere. Correct है? 1 ampere. Yes. So 3:2:1. So this must be actually the correct option. Okay. Because पहले क्या दिया हुआ है? AD दिया है ना, तो AD के अंदर का करंट पहले दिया है, उसके बाद फिर DB का दिया है, DB का, और तीसरा जो है DC का. मतलब ही I1, I2, I3 इस ऑर्डर में ही हमको रेशियो निकालना है, जो बन रहा है यहाँ पे 3:2:1. करंट के वैल्यूज ही 3:2:1 आ रहे हैं. देखो 3 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर. So these values are 3:1. So we can conclude that the ratio is also the same thing, that is 3:2:1. Yes, correct. Very good. Yes, all of you have given the correct answers. Kashish, Atharva, Tanvi. Let us move to the next question. Yes, I hope all of you have done this. Cell having EMF of 1.5 volt when connected across a resistance of 14 ohm produces a voltage only of 1.4 volt. Okay, then its internal resistance of the cell must be. That means once again the same diagram we have here. Suppose this is the wire. ओके, ये सेल है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है. यस, और दिया हुआ है कि अब इंटरनल रेजिस्टेंस उनको दिया ही नहीं है. लेट अस अज्यूम इट एज R, एंड E कितना दिया है? EMF वो दिया हुआ है 1.5 वोल्ट. करेक्ट है. जबकि यहाँ पे कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 14 ओम, तो मतलब ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R जिसको हम डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 14 ohm, right? And produces a voltage only of 1.4 volt. That means the voltage across this combination here, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, इसका वोल्टेज कितना मिल रहा है? V, which is going to be 1.4 volt. Okay, इसके इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज है वो हमको मिल रहा है 1.4 वोल्ट, राइट? 1.5 वोल्ट EMF है, बट उसमें से हमको 1.4 वोल्ट ही बाहर मिल रहा है. बाकी बचा हुआ 0.1 वोल्ट किधर गया?
ऑब्वियसली इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर गया रहेगा, राइट? सो what we have to do is you have to find out this internal resistance here. So we can use the formula that is E is equal to V plus I into R, small r. याद है ये फॉर्मूला? लेकिन I है क्या यहाँ पे हमारे पास? नहीं, I can be found out. So in order to find out this I, we'll use the Ohm's law in external circuit. What is Ohm's law in external circuit? V divided by R comes out to be I, right? So V upon R is going to be I. So here it will be V is going to be 1.4, right? And that is to be divided by resistance R, which is 14 ohm. So it gives the current to be simply equal to, देखो 14 upon 140, मतलब वो 0.1 बन जाएगा. Do you agree with this? 0.1 ampere. This is actually going to be the current flowing through this whole circuit. Now, if you want to find out this small r here, we can either use this formula, which is going to be 1.5 is equal to 1.4 plus 0.1 into small r. If we just transfer this 1.4 in that side, then we can get this 1.5 minus 1.4 to be equal to 0.1 into small r, so that this becomes 0.1 is equal to 0.1 into small r. So if we just divide both sides by 0.1, then we get this 0.1 upon 0.1 is equal to r. So r comes out to be actually equal to 1 ohm, correct? So which is there already in this option A here. Yes, very good. चलो, ये तो actually easy था. Next will be simply when a battery connected across a resistor of 16 ohm and the voltage across the resistor is 12 volt. Okay, that means once again there is a battery and there is a resistance ओके ये रेजिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे बैटरी है, ठीक है. क्या दिया वाले को से व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, तो रेजिस्टेंस जो है वो 16 ओम दिया हुआ है और ये बैटरी का ईएमएफ हमको पता नहीं. द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 12 ओम, 12 वोल्ट. तो मतलब इस पूरे रेजिस्टेंस के अंदर 12 इतना वोल्ट, इतना रेजिस्टेंस हमको वोल्टेज ड्रॉप हमको मिल रहा है, ठीक है. And when the same battery is connected across the resistance of 10 ohm, then the voltage across it is 11 ohm, 11 volt, right? That means अगर ये same battery हमने use किया, देखो ठीक से अभी same battery, ये देखो suppose ये same battery हमने copy किया, ठीक है. same battery है यहाँ पे, second situation में हमने ये इसको use किया है. Suppose that this is the first situation. Okay, and the second situation is drawn here. Remember, in both of these situations, the battery has not been changed. Okay, battery is going to be the same, but here what is changed here is the external resistance, right? External resistance of 10 ohm is connected in the second time. So इसलिए यहाँ पे जो resistance जो पहले 16 ohm था, तो वो अभी 10 ohm इतना बन गया और उस समय वोल्टेज कितना मिला हमको? 11 वोल्ट इतना वोल्टेज मिल रहा है. तो बाहर वाले इसमें 11 वोल्ट इतना वोल्टेज हमको मिल रहा है, ठीक है, जब हम 10 ओम का रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो. यस, वेरी गुड. तो अभी इसमें देखो, इफ वी एज्यूम दैट द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज ई एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज गोइंग टू बी सपोज आर, तो यहाँ पे भी वो तो वही होगा,
क्योंकि बैटरी हैज नॉट बीन चेंज्ड, बैटरी इज गोइंग टू बी द सेम, सो इसलिए यहाँ पे R and E will be the same. If now we just apply the Ohm's law on this complete circuit here, then अच्छा इसमें करंट कितना आएगा वो तो निकाल सकते हैं आराम से. देखो, how much will be the current in the first case? I1 we can say it will actually be E upon R plus R. डायरेक्ट करूं, देखो E कितना है पता नहीं हमको, that is E only, and that is to be divided by R plus R. तो R कितना है, कैपिटल R वो है 16, सॉरी करंट निकालने के लिए कंप्लीट सर्किट पे ओम्स लॉ नहीं अप्लाई करने का, वो भी चलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे E पता ही नहीं है ना, तो वी कैन नॉट यूज दिस Ohm's law on complete circuit in order to find out the current, but we can certainly use the Ohm's law in external circuit only to find out the current. तो देखो external resistance कितना है 16 ohm और external potential difference कितना है 12 ohm. Just divide both of these and get the current. So here it will be 12 divided by 16, which comes out to be इस दोनों को अगर reduce करेंगे तो हमको मिलेगा 3/4, right? 4 से reduce करना पड़ेगा. So 3/4 ampere. This is actually going to be the current. But as we know that E is actually equal to V plus IR. ठीक है, ये अगर हमने यूज किया तो उससे हमको क्या मिल रहा है, E के बदले हम डाल देंगे कि E का तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, V का वैल्यू है जरूर जो 12 वोल्ट है. ठीक है, 12 वोल्ट प्लस I which is again 3/4 into small r which is not known. Let us give this as equation number 1. Okay, and now let us try to derive the similar equation number 2 from this second condition, where current I2 here will actually be equal to ये I1 है. Yes, so I2 will actually be equal to the external potential difference 11 volt upon the resistance, external resistance, which is of 10 volt. So we can get this 11 upon 10, which comes out to be actually 1.1, right? 1.1 ampere. This is the current in the second case. But as we know that the Ohm's law applied to complete circuit is written as E is equal to V plus I into small r, right? So if we just replace this V by 11 volt, तो ये V के बदले 11 वोल्ट आ गया और करंट के बदले आएगा 1.1 ampere into small r kept as it is. And now we have to just solve these two equations simultaneously. Just instead of solving this simultaneously, just we can equate this E from both the equations, right? So if we equate the value of E from both the equations, we can get this value of E is 12 plus 0.75 R from this first equation, and the value of E is actually 11 plus 1.1 R in case of the second equation, right? So if we just take this in that side, it will become negative, and also we have to take this 11 in that side so that it will become negative, so that we get this next step. 12 minus 11 is equal to 1.1 R minus 0.75 R, right? So that we can just get this 1 is equal to 1.1 minus 7.5 kitna ban raha hai, 3.5, right? So here it is 0.35. Okay, so it is going to be 0.35 into R, so that we can just get this R to be simply equal to 1 upon 0.35. But as we know that this point shift करने के बाद हमको ये क्या मिलेगा, इसको हम लिख सकते हैं 100 upon 35, correct है, 100 upon 35, and this can be reduced by 5, so that we get this 5 sevens are and 5 20s are, correct? So we are going to get this 20 upon 7, which is going to be there in this option B here. Yes, very good, Prashant. Okay, so B option is going to be the correct one here. Yes. So I hope all of you, we have done all the questions
from that sheet which we have provided here. Okay, तो आपको जो दिया था उसमें से सारे ऑप्शन सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किए हैं.